Welcome to Pulsar's Career Point. This is the video on chemistry session. This is video on answers and pattern of evaluation of chemistry question paper in AHSE 2024. This is on the set D, question paper set D, and this is the third video of the solution containing the solution and pattern of evaluation of the long questions coming under group C. ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ସବୁଥିରେ 5ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ସେଟ୍ରେ କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଅଲଗା ଥିଲା କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ସମାନ ଥିଲା। ଏବେ ସେଟ୍ ଡି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5କୁ ଯିବୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 5ରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଥିଲା 5A ରେ ହାଉ ୱିଲ୍ ୟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଏସିଟୋନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆଇସୋପ୍ରୋପାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ। ଏଥିରେ 2 ମାର୍କ ଅଛି। आमको इक्वेशन लिखिले 1 मार्क मिलिबो एवं तार इक्वेशन स्टेटमेंट लिखिले आमको आउ 1 मार्क पड़िबो। आमे जोंटी को प्रथम लिखिले कि असुविधा नाही, मु सुविधा पाई प्रथम इक्वेशन टी लिखिछि। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को आमे तो कॉपरेटिव रे पास करिवो, से हमको एसीटोन आउ हाइड्रोजन गैस दबो। तापर स्टेटमेंट टी को लिखिया को पड़िबो। उभय इक्वेशन पाई 1 मार्क करी आमको 2 मार्क मिलिबो। तापर आमे सही क्वेश्चन नंबर 5 रो सेकंड पार्ट को जीवा 5B को हाउ डज एसीटोन रिएक्ट विथ HCN एंड NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन गिव 1 यूज ऑफ इट। एतरे पिला माने केते मार्क अछि ना HCN सहित रिएक्शन केमिति करे ता पई 2 मार्क अछि। हाइड्रोक्सिलामीन सहित रिएक्शन कले कोन हुए ता पई 2 मार्क अछि। आ गुटी यूजेस लिखिले ता पई 1 मार्क अछि। सो जेहेतु रिएक्शन विथ HCN सहित 2 मार्क अछि, एठी मध्ये इक्वेशन पाई 1 मार्क और स्टेटमेंट पाई 1 मार्क। आमको इक्वेशन टी को लिखिया पड़िबो। एसीटोन HCN सहित रिएक्शन करले बेस कैटालिस्ट प्रेजेंस रे आमको एसीटोन साइनोहाइड्रिन दबो। इक्वेशन लिखि साला पर स्टेटमेंट टी को लिखिया को पड़िबो। व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विथ HCN इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेसिक कैटालिस्ट देन एसीटोन साइनोहाइड्रिन इज फॉर्म। उभय इक्वेशन और स्टेटमेंट को 1 मार्क करी आमको एथिरे 2 मार्क मिलिबो। तापर सही सेकंड ईयर थिला डबल आई रे हाउ डज एसीटोन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामीन। एटी मध्ये 2 मार्क अच्छी। इक्वेशन रे 1 मार्क और स्टेटमेंट रे 1 मार्क। एसीटोन हाइड्रोक्सिलामीन सहित रिएक्शन कले केमिति डिहाइड्रेशन हुए और एसिटोक्साइम देखाए आमको इक्वेशन टी को लिखा को पड़िबो। ता पई 1 मार्क रहिबो एवं स्टेटमेंट टी को आमको लिखा पड़िबो। एसीटोन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म एसिटोक्साइम और यू कैन राइट डाउन व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिलामीन देन डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस एंड एसिटोक्साइम इज फॉर्म। जो भाई स्टेटमेंट लिखिले मध्य आमको से 1 मार्क मिलिबो एवं एई भली इक्वेशन रे 1 एवं स्टेटमेंट रे 1 करी आमको 2 मार्क मिलिबो। एबे एई 5B रो शेष पार्ट रहिला यूज ऑफ एसीटोन। व्हाट इज द यूज ऑफ एसीटोन? 1 यूज ऑफ एसीटोन से पछारिछि। एसीटोन इज जनरली यूज एज ए पेंट रिमूवर लाइक नेल पॉलिश रिमूवर। एबे जिबा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 को 6A रे थिला define specific conductance and molar conductance. What is the effect of dilution on specific and molar conductance of an electrolyte? 2 करी 4 मार्क अच्छी। पिला मन देख प्रथम 2 मार्क क्या ऊपर अच्छी ना डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलार कंडक्टेंस मीन्स आमको केवल डेफिनेशन लिखिले 1 मार्क मिलिबो। सो प्रथम आम स्पेसिफिक कंडक्टेंस रो डेफिनेशन लिखिबा। What do you mean by specific conductance? Specific conductance is the conductance of 1 centimeter cube of a solution of an electrolyte in between the electrodes exactly 1 centimeter apart. It is denoted by the symbol K kappa. If a second part देखिबा आमे definition of molar conductance लिखिया को पड़िबो। So what do you mean by molar conductance? The conducting power of all ions produced by dissolving 1 gram mole of electrolyte in solution is called molar conductance. It is represented by the symbol lambda m. एई भली 1 मरी आमे 2 मार्क आंसर लिखि सारलु। एबे सेकंड पार्ट को जीवु। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक एंड मोलार कंडक्टेंस? स्पेसिफिक कंडक्टेंस पई डाइल्यूशन ला इफेक्ट कोन ता पई 1 मार्क मिलिबो एवं मोलार कंडक्टेंस पई डाइल्यूशन ला इफेक्ट कोन। सो आमे सेकंड पार्ट रे बे लिखिबा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन रे कोन हुए? ऑन डाइल्यूशन द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट गोज ऑन इंक्रीजिंग। जितेबाला इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन इंक्रीज कर नंबर ऑफ आयन्स बढ़ नंबर ऑफ आयन्स सॉल्यूशन ले बढ़िले
तार मोलार कंडक्टेंस कही बा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कही ये इंक्रीज कर तुमको लिखा पड़ो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयन्स furnished by an electrolyte the molar conductance as well as the equivalent conductor ये प्रश्न equivalent conductance ता किसी पचारी नहीं so you may or may not write of the electrolyte goes on increasing in the solution एबे देखिबा तारो specific conductance कौन होची due to increase in dilution specific conductance से कौन होची that the specific conductivity K of the electrolyte decreases with the addition of water or upon dilution. Why? Because the number of ions per unit volume decreases. Number of ions बढ़े किंतु volume of solution मध्य बढ़े जहाँ पर volume of per unit volume रे number of ions decrease करे ता concentration decrease करे तेणु तारो specific conductance और specific conductivity decrease करिबा एई भली specific conductivity by 1 mark और molar conductivity by 1 mark हमको total 2 mark मिलिबो एबे जीवा सेकंड पार्ट ऑफ दिस लॉन्ग क्वेश्चन 6b राइट ए नोट ऑन डैनियल सेल एठी ते तो 3 मार्क अछि हमको डैनियल सेल कोन लिखिया को पड़िबो आ गोटे एग्जांपल दबा को पड़िबो द गैल्वेनिक सेल इन व्हिच जिंक कॉपर सल्फेट रिएक्शन occurs is known as डैनियल सेल इन द डैनियल सेल द सॉल्ट ब्रिज इज रिप्लेस्ड बाय porous pot हमें जोंटी गैल्वेनिक सेल रे सॉल्ट ब्रिज नउथुल एठी porous pot हिसाब रे ताको यूज करा जाय so that the two electrolytes remain separated but the ions diffuse through the porous pot से डैनियल सेल भीतर हमको आउ कौन कथा लिखा पड़ो ना आमको गोटे डैनियल सेल अरेंजमेंट देखा पड़ो किभली जिंक कॉपर सल्फेट रिएक्शन हुए आमको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर वेसल नवा पड़ो ता भितर गोटे porous pot भितर गोटे जिंक रड को डिप करिया को पड़ो एवं यही अरेंजमेंट टी डायग्रामेटिकली देखि सारा पर ता विषय स्लाइटली थ्योरेटिकली लिखा पड़ो इन दिस केस द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज टेकन इन ए कॉपर वेसल which serves a cathode zinc sulfate solution is taken inside the porous pot in which zinc rod is dipped which serves as anode porous pot is placed in the copper sulfate solution working of the Daniell cell is similar to that of galvanic cell एबे आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तृतीय लंग क्वेश्चन 7 को एथरे मध्ये दुईटी पार्ट थिला 7a रे थिला व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एथिरे 2 मार्क थिला डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूशन तापर 3 मार्क अछि आगे आमे डिफाइन करबा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहले कोन बुझिबा लिक्विड व्हिच बॉइल्स लिक्विड केतेबेले बॉइल करे ना व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बट इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज lowered by addition of non volatile solute it is apparent that the boiling point of the solution will be higher than that of the pure solvent in other words the boiling point of the solvent is elevated by the addition of non volatile solute to it this is known as elevation in boiling point delta TB. If we plot a graph between the different values of temperature and the vapor pressure for pure solvent as well as for its solution, then two curves are obtained as given below. हमको ग्राफिकल डायग्राम टी करबा को पड़िबो तापरे हमको एटी तार रिलेशनशिप सहित प्रूव करिया को पड़िबो इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोली if the boiling point temperature of the pure solvent is T1 and that of solution is T2 then elevation in boiling point delta TB may be given by delta TB is equal to T2 minus T1 mathematically delta TB is equal to Kb into m where Kb is the molar elevation constant depending on the obtained by dissolving 1 moles of solute in 1000 gram of solvent as Kb is constant so delta TB is directly proportional to m as it depends upon the molar concentration the molar elevation in boiling point the elevation in boiling point depends upon the molar concentration of the solute so it is a colligative property एबे हमको देखिबा को पड़िबो the relationship between elevation in boiling point delta TB and molecular mass m जिबा relationship पाखको the elevation in boiling point delta TB is useful in determining the
molecular mass of the solute M. The mass of the solute is equal to W1 gram, whereas solvent is equal to W2 gram. Molecular mass of the solute is equal to M. Molality of the solution M, small m, is equal to mass of solute in gram per 1000 gram of solvent by molecular mass of the solute. That is, M is equal to W1 into 1000 by W2 into M. That is molecular mass. Again, delta TB is equal to kVm. Putting the value of M in this equation, we can write down delta TB is equal to kB into W1 into 1000 by W2 into M. Thus, M, rearranging this equation, we can write down M is equal to kB into W1 into 1000 by delta TB into W2. This is the required relationship between elevation in boiling point and molecular mass. ये गला क्वेश्चन नंबर 7 रो ए रे 5 मार्क आंसर आउ सेकंड पार्ट रे गोटे छोट प्रॉब्लम टे थिला एन aqueous solution of glucose whose molecular mass is equal to 180 containing 12 gram W dala 12 gram it dissolved in 100 gram of water was found to boil at 100.34 degrees Celsius. While the boiling point of the pure water was 100 degrees Celsius, calculate the molar elevation constant for water. ये हमको कौन कौन डाटा दिया गला ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया 100 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन दिया 100.3 डिग्री सेल्सियस सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 0. बाय मिस्टेक डेल्टा एफ लिखाई डेल्टा टीबी लिखिदेव 0.34 डिग्री सेल्सियस ये वेट दिया 12 ग्राम वेट ऑफ द सॉल्वेंट दिया 100 ग्राम एम इज इक्वल टू मोलिकुलर ग्राम मोलिकुलर मास 180. So delta TB is equal to 1000 into kb into W by m into W. Putting the values, we can add down 0.34 is equal to 1000 into kb into 12 by 180 into 100. That is kb. By rearranging this equation, we can write down the values of kb to 0.51 Kelvin per mole per kg. एबे जिबा आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 8 फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ d orbitals under the influence of an octahedral crystal field. Crystal field splitting in octahedral complexes. In an octahedral complexes there are 6 ligands surrounded the metal atom or ion. Repulsion takes place between the electrons in metals d orbitals and the electrons of the ligands. The repulsion is more pronounced when the metal d orbital is directed towards the ligand than when directed away from the ligand. Then we have to write down that is as a result dx square minus y square and dz square orbitals which point towards the axis along the direction of the ligand will experience more repulsion than dxy, dyz and dxz orbitals which are directed between the axes. The energy of dx square minus y square and dz square will be raised while that of dxy, dyz and dzx or dxz will be lowered as compared to the total average energy of the spherical crystal field. Thus, we can draw the diagram also. In the next slide we draw it. Thus, due to metal electron ligand electron repulsion, the degeneracy of the d orbitals has been lost in the octahedral complex. Two sets of d orbitals are formed, T2g and Eg. T2g set comprising of 3 orbitals of lower energy, Eg set having 2 orbitals of higher energy. We can show it by the energy level diagram. Then we have to write down the factors that affect the crystal field splitting are charge on the metal ion and field produced by the ligand. The splitting will be large if the ligands produce strong field, whereas the splitting will be small if the ligands produce weak field. Crystal field stabilization energy CFSE. The electron always prefers to occupy orbitals of lower energy in an octahedral complex containing 1 d electron. It is
evident that the electron would occupy one of the T2G orbitals. This orbital has energy minus 0.4 delta 0 compared to the energy 0 for hypothetical degenerated d orbitals. Thus, the complex will be 0.4 delta 0 more stable than predicted by the electrostatic theory. The decrease in energy 0 minus 0.4 delta 0 that is equal to 0.4 delta 0 is known as the crystal plate stabilization energy of the complex under consideration. Crystal plate splitting energy CFSE. For a D2 system, the two d electrons will prefer to occupy T2G orbitals. The CFSE, that is crystal plate stabilization energy, is 2 into 0.4 delta 0, that is 0.8 delta 0. For a D3 system, it should be 0.4 into 3, that is 1.2 delta 0. But for a D4 system, there are two possibilities. All the four may occupy the 3 2G orbitals. So one electron must be paired, or 3 electrons occupy T2G orbitals, 1 and 1 EG orbitals. Next, second part रे क्वेश्चन थिला राइट ए नोट ऑन वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी. एतरे 3 मार्क थिला. हमको वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी विषय लिखिया को पड़िबो. Postulates of Warner's coordination theory are metal atoms in coordination compounds exhibit two types of valencies, such as primary valency and secondary valency. The primary valency is non-directional and ionizable. It corresponds to the oxidation state. The secondary valency is directional and non-ionizable. It corresponds to its coordination number. Each metal atom exhibits a fixed number of secondary valencies, that is, it has a fixed coordination number. The primary valencies are satisfied by the negative ions, whereas the secondary valencies are satisfied either by negative ions or by neutral molecules. The secondary valencies are responsible for imparting a particular geometry to the coordination compound. बर्तमान आम एग्जांपल को जीवा. फॉर एग्जांपल, इफ द सेंट्रल मेटल आयन हैज 4 secondary valencies, then they form either tetrahedral or square planar arrangement around the central metal ion. If the central metal ion has 6 secondary valencies, then these are arranged octahedrally around the metal ion. In other words, the stereochemistry of the complex is determined by the secondary valencies. एबे गोटे एक्सप्लेनेशन नवा स्ट्रक्चर नहीं आम गोटे स्ट्रक्चर टे ड्र करिछु. इज द स्ट्रक्चर ऑफ COCl3 5 ammonia complexes. Here total number of ions is 3, 2 numbers of chloride ion जोगुड़ी को प्राइमरी वैलेंसी करिछि एवं 1 कॉम्प्लेक्स आयन एवं कॉम्प्लेक्स टी किए COCl ammonia हल 5 Cl2 जो दुईटी प्राइमरी वैलेंसी करिछि से कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाहर रहइबो. द नंबर ऑफ Cl minus ions getting precipitated in addition of AgNO3 is equal to 2 because 2 chloride ions are in formation of primary valency only. जो थर्ड क्लोरीन टी अच्छी यहाँ प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बोथ है. 1 Cl minus ions exhibit dual character. It is held by a secondary as well as by a primary valency. এইভাবে आमको वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी को गोटे एग्जांपल सब बुझा पड़ो. एबे आमे लास्ट क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 को जीवा. How is benzene diazonium chloride prepared from aniline? एइथिरे पिला माने 3 मार्क अछि. सो aniline लु किभଳି आमे benzene diazonium chloride पाइबा ए प्रिपरेशन टी को इक्वेशन प्लस स्टेटमेंट रे लिखिया को पड़िबो. ये जेहेतु 3 मार्क अछि इक्वेशन ले 1.5 स्टेटमेंट रे 1.5 रही पारे बा 1 2 डिवाइडेशन ही पारे. ये वैल्यूएशन स्कीम रे जेमिति आसीबो सेहि भଳି भाबरे डिवाइडेशन टी हबो. अबाउटली इट शुड बी 2 + 1 इक्वेशन ले 2 एवं स्टेटमेंट रे 1 ही पारे. सोडियम नाइट्राइट HCl सहित रिएक्शन कले आमको सोडियम क्लोराइड आउ HNO2 देई थाए. जते बेले आमे एनिलीन को नाइट्रस एसिड सहित रिएक्शन कलु इन कांस्टेंट HCl सेते बेले डाइल्यूट HCl एट हाई स्कूल टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस
ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସିଏ ଆମକୁ ବେଞ୍ଜିନ୍ ଡାଇଜୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରେ। ପ୍ରଥମେ सोडियम नाइट्रेट HCl केमती नाइट्रस एसिड दिए ताको देखिए देवाक पड़ो। तापर नाइट्रस एसिड कन्सर्न HCl सह मिसी आनिलीन सहित रिएक्शन करी केवल आइसकोल्ड टेम्परेचर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड दिए या इक्वेशन लिखा पड़ो। When aniline reacts with nitrous acid and dilute HCl at ice cold temperature, that is 0 to 5 degrees Celsius, then benzene diazoxide chloride is formed. आउ रहा दुईटी रिएक्शंस दुईटी सिंथेटिक यूजेस जो दुई दुई मार्क अच्छी। हाउ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। प्रथम देइछि बेंजीन, आमे प्रथम देखिया बेंजीन किभଳି बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिलिबो। ए पर 2 मार्क अच्छी मीन्स हमको इक्वेशन ले 1 मार्क एवं स्टेटमेंट रे 1 मार्क मिलिबो। जते बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को आमे हाइपोफॉस्फोरस एसिड सहित रिएक्शन करिबा से हमको बेंजीन दबो। इक्वेशन टी लिखि सारला परे हमको स्टेटमेंट लिखिया को पड़िबो। When benzene diazonium salt solution is treated with hypophosphorus acid, the diazo group is replaced by hydrogen and benzene is formed. एटारे इक्वेशन रे 1 एवं स्टेटमेंट रे 1 एवल 2 मार्क मिलिबो। एबे सेकंड पार्ट ऑफ दिस सिंथेटिक यूजेस रे जिबा। हाउ आइडोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। एटी मध्ये 2 मार्क अछि। इक्वेशन रे 1 मार्क एवं स्टेटमेंट रे 1 मार्क। जेतेबेला हमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हीट करबा विथ पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन सेतेबेले कोन हबो से हमको आइडोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl दब। इक्वेशन एक्सला पर स्टेटमेंट लिखिया पड़िबो। व्हेन बेंजीन डायजोनियम इज हीटेड विथ पोटासियम आयोडाइड देन आइडोबेंजीन इज फॉर्म। एबोली हिसाब रे इक्वेशन रे 1 एवं स्टेटमेंट रे 1 हमको टोटल 2 मार्क्स मिलिबो। एबोली आमे सब ग्रुप सी रे थिबा समस्त लॉन्ग क्वेश्चन लो आंसर्स एवं तार इवैल्यूएशन पैटर्न को डिस्कशन कलु। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल Bhopal Search Chemistry Career Point. Please like and share this video. Don't forget to subscribe my channel if you are watching it for the first time. Don't forget to hit the bell icon to get timely updation of my new video. Thanks for watching.